हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की ऑनलाइन क्लास में सोशल साइंस में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इनका पीडीएफ देख रहे हैं। ठीक है, रिवीजन चैप्टर है आपका। तो सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे, विच इंडस्ट्री इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज अ बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई, यानी कि कौन सा उद्योग जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। सो आंसर है आपका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिफर्ड टू एज द backbone of modern industry because almost everything we use is made of iron or steel or has been made with the tools and machinery of these metals। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड जो है लौह इस्पात उद्योग को ही कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे लोहा इस्पात से बनी होती है अथवा लोहा इस्पात से मशीन निर्मित औजारों से बनी होती है। सेकेंड पेज देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द टू मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख दो समस्या। सो लेट्स आंसर द टू मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर, नंबर फर्स्ट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, मतलब यहाँ पे है उन्नत लंबे क्या बोल सकते हैं, उन्नत लंबे रेशे वाली कपास का अभाव होना। नंबर सेकंड है द कंपटीशन ऑफ इंडियन कॉटन इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो भारतीय देशों का जो रेशों का जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा न हो पाना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स पीसफुल मूवमेंट, एक शांतिपूर्ण आंदोलन है अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध बाय ब्रिटिश रूल। सत्याग्रह मीन्स कंसर्न अबाउट द ट्रूथफुलनेस और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट exploitation in a peaceful manner। Question number 4 है, why did the villagers do when the sarpanch did not give the correct information। When sarpanch did not give information, the laborers took the help of the Habib and Ramu and gave the application to CEO। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इज अ मैन ऑफिसर ऑफ द जनपद पंचायत। व्हाट वाज मोप्लस फार्मर्स मूवमेंट। मोप्लस फार्मर्स मूवमेंट इन केरला स्टेट इन द सम पार्ट ऑफ द मोपला फार्मर्स स्टार्टेड द मूवमेंट। द रिबेल्स वर द मोस्टली मोप्लास पीजन, सो इट इज कॉल्ड द मोपला रिबिलियन। द रिबिलियन वर suppressed brutally, more than 2,000 Moplas were killed and about 45,000 arrested. Moplas prisoners were loaded in the railway wagon and sent to the another place. Due to the suffocations, and 67 prisoners died in the railway wagon while the shifting from one place to another। नेक्स्ट आपको गिव द आंसर ऑफ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत, व्हाट डू यू मीन बाई पासपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पासपोर्ट इट इज एन द आइडेंटिफाई कार्ड इशूड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री टू द पर्सन हु वांट टू गो द फॉरेन country। On passport, the full information of the person along with his photographs is given. It is sealed by ministry। ठीक है, तो क्या बोला गया, पासपोर्ट जो होता है एक तरीके से जो है परिचय पत्र होता है जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो होते हैं उनको इशू किया जाता है। पर्सन हु वांट टू गो टू द फॉरेन कंट्री, जब विदेश जाने के लिए जो होता है इनको ये परिचय पत्र जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो अनिवार्य होती है। ऑन पासपोर्ट द फुल इन्फॉर्मेशन, और पासपोर्ट में जो होता है पूरी जानकारी होती है उस व्यक्ति का, साथ में एक पासपोर्ट जो होती है उसमें फोटोग्राफ भी होना चाहिए, यह लगा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, whereas mineral based industry use the mineral as their raw materials for, that is food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy product। जबकि इसकी एग्जांपल जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक्सेट्रा।
Within how many days after the application in the regarding Right to Information Act, the complaint officer should be the informed of about, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत जो है चाहे की जानकारी जो है कितने दिनों तक देने जाने का नियम है। तो विथ इन 30 डे, लगभग जो होता है 30 दिनों के अंतर्गत। आफ्टर द एप्लीकेशन इज गिवन, द competent officer should given the information to the applicant. Why is the Bangalore famous for? Bangalore is the biggest city of southern India. It is the biggest industrial center. It is the famous for the transportation and the manufacturing industry. It is the center for the communications, aeronautics, electricity, printing, cotton, silk, shoes and watches. It is the biggest center of software, so it is called the electronic city of India. What is section 144? Section 144 for social security and good governance. This section is applicable. Number second, under this section there is a ban on the public meeting, sabha and assembly or the standing in groups. Number third, one cannot go out of the house unless it is a very urgent and unavailable to go, and that too with the permission of the police. Next question, name the foreign policy of India framed in 1962. India had not framed any specific policy before 1962, but after 1962 a new policy was framed by India because China attacked our country. The policy was known as the नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष नीति ऑफ इंडिया आफ्टर 1962. India changed plan in the defense and foreign policy. See also the increase its army and weapons. In the beginning, national leaders had what type of views? In the beginning, national leaders had moderate views. Who wrote national song, from where it is taken? Rabindranath Tagore wrote national song. It is taken from Gitanjali. ये पेज के लिए नहीं आया है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इनके आप क्लिपिंग अलग भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. Write four names of the religious place of India. The four main religious places of India are the Haridwar, Varanasi, Jagannath Puri and Rameswaram. What are the base of the industries? The base of industries are raw material, ownership, size of India industry and the nature of the industry. Write the name of the newspaper published by Madharao Sapre. Chhattisgarh Mitra, Hind Kesari. Give the answer of the short type answer question. Why is the cotton industry rapidly growing in Mumbai? Following are the causes of the cotton industry rapidly growing in Mumbai. Number first, availability of raw material, cotton, coastal climate conditions, port to bring machines and the send product outside. Write 3 points about the law of 1919. 3 points about the law 1919. Number first, this act was known as the Rowlatt Act. Number second, the act was also called as the Black Act. Number third, the main aim of this act was to suppress national movement. Who called the slogan of Vande Mataram in Chhattisgarh? Dada Saheb Khapade and his followers called his slogan in Hanuman Mandir in Tatiapara Chowk. If Sarpanch had not agreed, then what would have been done? The CEO saw the complaint letter of laborers and looked into the matter carefully. He found the mistake. Sarpanch agreed with fault. If he would have not been agreed,
the officer and would have dismissed him, and the case of the cheating against him would have been failed, and sarpanch may be sent to jail. Number 5 है आपका, what do you mean by the quality of people? The social culture and the political acceptance of people come in the equality of people due to the to its efficiency, economy, productions capacity, scientific skill, and technical development take place. Okay, so last pages देखिए यहाँ पे, why are the human resource important? People can take the best use of the nature, create more resource when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. People are human resources. Number 2 है आपका, what do you understand by the educational and cultural rights? Number 3 है, what are the main source of income for the government find? Number 4, what do you celebrate Republic Day on 26 January? And why cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai? Number 6, what is foreign policy? Number 7 है, why is the land considered and the important resource? सो 1 to 7 जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में कॉपी राइट करेंगे. ओके, दैट्स ऑल.